हेलो फ्रेंड्स, होप आवाज आ रही है. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. कैन समवन प्लीज राइट इन चैट की स्क्रीन दिख रही है ना, और आवाज भी आ रही है, राइट? Yes, we can see. ये चलो, थैंक यू सो मच. सो दिस व्हाई दिस कंसेप्ट इज इंटरेस्टिंग. पीपल चार्ज अ लॉट टू लर्न दिस कंसेप्ट, ठीक है ना? माइट बी सिम कि हम ऐसे ही बोला, बट दिस इज द फैक्ट. पीपल चार्ज अ लॉट टू लर्न दिस कंसेप्ट, एंड व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ ट्रेडर और एज अ इन्वेस्टर ऑल्सो. ठीक है, तो बहुत जन सोच रहे इन्वेस्टिंग ट्रेडर को फायदा नहीं, तो ट्रेडर को भी इससे फायदा हो. हाउ इट हेल्प मी एंड हाउ इट कैन हेल्प यू ऑल्सो. ठीक है, तो अभी ये शायद बहुत जन ने वर्ड सुना होगा, ईपीएस एंड पी. आप न्यूज चैनल ले लो, फ्रेंड्स ग्रुप ले लो, व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स, एवरीवेयर यू आर हियरिंग कि पी महंगा है, पी सस्ता है. ठीक है, सो वी विल एनालाइज व्हाट इज ईपीएस, व्हाट इज पी. वी विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स कि सबको समझ में आ जाए. ठीक है, हर हर जन समझ पाए वैसा वी विल स्टार्ट, एंड सो दैट वी कैन लर्न ग्रेजुअली कि सब चीज क्या हो रहा है. सो सबसे पहले वी विल कम लेटर टू फॉरवर्ड एंड ट्रेलिंग क्या होता है. सबसे पहले व्हाट इज ईपीएस. तो ईपीएस सिंपली मींस जो प्रॉफिट कंपनी के पास रहता है आफ्टर गिविंग एवरीथिंग, टैक्सेस, ठीक है, एक्सपेंसेस जो भी, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट कंपनी के पास बच रहा है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इज नोन एज ईपीएस. व्हाट इज प्राइस अर्निंग रेशियो. its simple formula is market price divided by EPS is price per earning ratio. तो नाउ कमिंग टू ट्रेलिंग. मतलब ट्रेलिंग मतलब पुराना, फॉरवर्ड मतलब आने वाला साल. सो ट्रेलिंग मीन्स द बैक दिस ईयर एंड फॉरवर्ड मीन्स द कमिंग ईयर. सो आई हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ अ प्रीवियस डेटा. सो पीडीलाइट का मार्च 20 में पैट मतलब वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ओके, इट वाज अराउंड 1100 करोड़. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स वाज 50.81 करोड़. So उसका EPS was coming around 21.68. So this 21.68 is known as the trailing EPS. मतलब जो लास्ट ईयर इनका EPS हो गया मार्च 20 में, that is known as trailing EPS. So suppose we are sitting on May 21 और June 21, तो उनका रिजल्ट आया होगा अप्रॉक्स May 21 में रिजल्ट आया था, तो जून May 20 में रिजल्ट आया था, तो June 20 में if you analyze, then you will be saying कि जो March 20 का EPS था, that is a trailing EPS. So 21.68 means that we are Pidilite earns 21.68 rupees per share. ठीक है, तो आप जो Pidilite के लिए 1750 प्राइस था एक्चुअली उस टाइम में, तो यू विल पेइंग मोर देन द अर्निंग ऑफ Pidilite. तो सपोज Pidilite का वैल्यू 21.68 ही था, बट आप दे रहे हो 1750 रुपया. तो when you simply divide, तो we have learned कि price earning का formula is market price divided by EPS. तो market price is 1750, EPS is 21.68. तो price earning is coming 80.72. तो आप मान लो 81. ठीक है, तो अभी एक शेयर खरीदने के लिए अपने 80 रुपीज ज्यादा दे रहे हैं. ठीक है, 80 टाइम्स दे रहे हैं, तो वैल्यू इज 21.68 रुपीज. तो मान लो 22 रुपीज पर शेयर का वैल्यू है, ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर इज 22 रुपीज. बट सिंस इट्स अ गुड कंपनी, गुड ग्रोथ, तो वी आर पेइंग 81 टाइम्स मोर टू बाई वन शेयर फ्रॉम द मार्केट. सो ये 80.72 है, इसको बोलते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो, एंड अगेंस्ट 21.66 ईपीएस इज ट्रेलिंग. तो 80.72 जो है ये भी हो जाएगा ट्रेलिंग प्राइस अर्निंग रेशियो. तो नाउ अब हम जून 20 में जब बैठे थे, तो आई थॉट कि यहां से हाउ कैन आई एस्टिमेट कि व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ दिस कंपनी. इज इट फेयरली वैल्यूड या ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड है. तो अभी आई हैव सीन पीडीलाइट का ग्रोथ, तो आई वाज अज्यूमिंग पीडीलाइट विल ग्रो विद 25% मोर नेक्स्ट ईयर. तो सिंपली क्या करना है, 25% मोर मतलब इसका ईपीएस भी 25% से ग्रो कर रहा है, ये assumption था. तो ईपीएस इज कमिंग नाउ एट 27 रुपीज. ठीक है, अगर ये 27 रुपीज होता है, तो एज ऑन June 20, what I will be doing, I will be doing this exercise. If next year EPS is 27 rupees per share, and we are right now paying 1750 to buy that Pidilite का share, तो आज के डेट के हिसाब से June 20 में the P becomes 1750 by 27, the market price divided by EPS, मतलब 64.81 का P हो जा रहा है from 80.72. तो as on date
the P is lower because we are expecting EPS to jump higher. तो इस केस में फॉरवर्ड EPS क्या हो जाए 27 फॉर मतलब आने वाले दिन वी आर एस्टिमेटिंग बिकॉज सी ऐसे ही बोलते हैं मार्केट इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग मार्केट इज नेवर बैक मार्केट नेवर लुक्स बैक मार्केट ऑलवेज लुक्स फॉरवर्ड तो इसलिए हमेशा फॉरवर्ड पे ध्यान देना चाहिए बट राइट नाउ आई एम सीइंग सोशल मीडिया पीपल आर ओनली लुकिंग एट करंट सिचुएशन बट आप फॉरवर्ड लुकिंग थोड़ा देखो कि मार्केट क्या दिखा है तो एज ऑन डेट एज ऑन जून 20 हम ऐसे ही बोलते हैं कि फॉरवर्ड ईपीएस इज 27 और 65 इज फॉरवर्ड पी नाउ वी विल यूज ऑल दिस डेटा इन इंडेक्स तो आपको समझ में आएगा कि निफ्टी क्यों फेयरली वैल्यूड है या नहीं है व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन 27 22 750 22 800 won't be broken so easily हो सकता है टूट जाए हो सकता है निफ्टी नीचे भी आ जाए बट इतना इजीली वन टाइम टू टाइम थ्री टाइम में नहीं ब्रेक होगा So I have a fundamental reason apart from technical. That is the reason I have saying again and again since last 15 days, 20 days. ठीक है अभी आप मान लो ये 25% जो एस्टिमेट था वो हुआ ही नहीं ठीक है अभी मान लो ईपीएस 18 आया डी ग्रोथ हो गया ईपीएस में जो 21 था और पीडीलाइट का ड्यू टू मार्केट कंडीशन एनवायरमेंट ऐसा इकोनॉमी का उसका 18 आ जाए तो आपका पी उस समय क्या हो जाएगा पी विल बी एक्सपेंसिव पी विल बी 98 टाइम्स इंस्टेड ऑफ द करंट 81 टाइम्स देन वी विल से कि स्टॉक इज एक्सपेंसिव अगेन एंड वी माइट सी अ करेक्शन इन द स्टॉक यही रीजन होता है कि स्टॉक्स में करेक्शन आता है अभी आप जो टीवी में सुन रहे हो या मेनी फंड मैनेजर कमिंग ऑन टीवी एंड दे आर सेइंग रिपीटेडली मार्केट इज ओवरवैल्यूड स्टॉक वाज ओवरवैल्यूड 100 का पी में कर रहा था बिकॉज वो ग्रोथ नहीं आ रहा तो कोई स्टॉक अगर भी 100 का पी में है बट इट्स नॉट एबल टू अचीव the growth of 20-25% as a reason वो fall आएगा on stock price ये जब 1750 वाला if it 1750 becomes 1500 then your P will become 80 times again okay so 1500 में it will be reasonably valued तो आप उसको उस टाइम में बाई कर सकते हो if you have understood this concept okay so what we have learned simply EPS क्या होता है P क्या होता है तो करंट में जब मैं करता हूँ उसको बोलते हैं ट्रेलिंग EPS trailing P, the one we are estimating 1 year forward, it's known as forward P and forward EPS. Now, let's come to this sheet. I guess आपको एक Excel sheet दिखाई दे रहा है, right? Can someone please unmute or? Yes, we can see that. So see, this I have made. How you can also make? I will just guide you also. कि आप भी इसको बना सकते हैं I have made to save the time actually ये अपना थोड़ा टाइम सेव हो जाए Friends, यहाँ पे क्या हो रहा है I'm just zooming in so that you can understand. Let's focus on Nifty. So these are the Nifty EPS P price. So this all are current. So these are trailing. ठीक है और ये expected EPS है forward पे यहाँ पे तो अभी forget this thing. Don't see this. Only focus on this thing. So currently Nifty का P is around 20.4 as on yesterday closing. Nifty is closed around 22,900. Okay. तो उस हिसाब से the EPS what we have done we know the EPS of Nifty 50. So it's around 1123. 20.4 is the P and price is around 22,910. Simple formula. This into this. तो अभी मैंने क्या किया मैंने मीडियन पी पे कैलकुलेट किया निफ्टी का तो ये मीडियन पी कहाँ से मिला यू कैन फाइंड फ्रॉम स्क्रीनर आई विल शो यू कि कैसे स्क्रीनर आप देख सकते हो तो एज पर मी लास्ट इतना सालों का निफ्टी का मीडियन पी 21.9 मेनी विल फाइट दिस बिकॉज ये इसलिए ज्यादा हो गया मेनी विल से निफ्टी का मीडियन पी इज ओनली 17-18 बट अगेन यू हैव टू सी 21.9 simply means because right now many companies in Nifty 50 are highly growth companies. So trying to be है उसमें ठीक है जिसका P is almost at so much high तो ऐसा बहुत सारे companies जिसका P is high and that's the reason कि median is moved forward. तो simply क्या मतलब हुआ कि जिस चीज का median is और median मतलब क्या हुआ एवरेज simple language में आप समझो तो एवरेज होगा तो एवरेज P of Nifty is 21.9 currently it's 20.4 तो ये ऐसे ही चीप है ठीक है ये ऐसे ही चीप what I am assuming since I told you market is always forward looking market हमेशा सोच रहा है कि आने वाला साल में क्या होगा
So right now EPS is 1123. I am expecting, I have just shared a newsletter also. आप newsletter में जाना, वहां पे मैंने ये बोला भी निफ्टी का जितना भी रिजल्ट आया है as of now, तो the revenue growth on average is only 5% or 4.5%. I am expecting from March or June onwards, we will see double-digit revenue growth again in many companies coming because of price hike जो हुआ है, price increase जो हुआ है, सबका मार्च से जून से इफेक्ट दिखाई देगा. ठीक है, तो अभी मेरा assumption है कि निफ्टी का EPS will grow by 10%. तो आई हैव सिंपली एक फॉर्मूला मारा कि 1123 का EPS मार्च 26 में it will become 1235. Again, it's a subjective. You can take 8%, 5%, 12% as per your expectation. My expectation was simply कि निफ्टी का EPS 10% यहाँ से बढ़ना चाहिए. अगर 10% बढ़ता है तो निफ्टी का expected EPS will become 1235. So as on date, what we have learned in Pidilite का example, if I calculate forward P, it will come. So the formula is simply आज का market price 22,910 divided by expected EPS, that comes 18.55. तो forward P is only 18.55. तो ये जितना नीचे जाएगा, तो suppose निफ्टी यहाँ से 22,750 जाता है, तो it becomes 18.42. If it goes 22,600, it becomes 18.3. If it goes 21,800, as per head and shoulder target जो आ रहा है technical का, if you see weekly chart of Nifty, head and shoulder breakdown है, तो उसका target pattern target is coming around 21,800. So if Nifty moves to 21,800 also, it becomes 17.65. So it becomes more and more cheaper. ठीक है, तो यही reason है 22,800 में Nifty is already cheap because the median is much higher. So people will be buying more and more ETFs इस टाइम में. अब मान लो बहुत जन का मन है 21,280 बजट का लो, if Nifty goes, what will happen? See, if 2280 जाने से निफ्टी का P becomes 17. और जो बहुत जन, since I don't read much on social media from last few months, but in group also many are saying 20,500 चला गया. At 25 it becomes 16. Guys, it's dead cheap. People will sell their house and buy Nifty. तो ऐसा नहीं होता, ठीक है? It will only happen in an event. So always remember दो तरह करेक्शन होता है. एक होता है फास्ट करेक्शन, एक होता है प्राइसिंग टाइम करेक्शन. The fast correction you have seen in COVID. In 7-10 days everything become, Nifty become, बोलते ना आधा हाफ हो गया था, ठीक है? Nifty fall came like anything. Every day 500, 700,000 point was coming. But this correction from past 6 months, have you seen 2022, 2018 also? ये धीरे-धीरे correction चलेगा. With time also, the price will correct. As a result, Nifty धीरे-धीरे cheap हो रहा है. But see, when it was at 26,000, P was costly, ठीक है? Because उस समय growth नहीं आ रहा था. So right now, what I am assuming, अभी यहाँ पे आप बोल सकते हो हमको 10 नहीं, हमको लग रहा है Nifty will grow at 8%. You just go and 8% का calculation करो, तब भी Nifty is cheap. You are thinking if 5% की growth हो जाता, तब भी Nifty is cheap. Okay, so I'm taking best case as per environment, as per control of various big companies. I'm expecting 10% EPS growth होगा यहाँ से. So this was the case of Nifty 50. So as on date, Nifty 50 is cheap. Why I think Nifty will not break 22,800? I guess it's clear now. एक टेक्निकल भी क्लियर कल हमने करी था ग्रुप में, और फंडामेंटल भी ये क्लियर है. तो यहाँ से जितना निफ्टी नीचे जाएगा, आई विल ट्राई टू बाई मोर ऑफ निफ्टी बीज, निफ्टी ETF फ्रॉम म्यूचुअल फंड. जैसा आप जो जैसा बाई करता है, दे कैन डू. सो डोंट गो एंड सी व्हाट पीपल आर सेइंग. इट्स ऑल ऑन डेटा व्हिच वी आर ट्राइंग टू से यू पीपल, सो दैट आप पैनिक नहीं करो एंड यू आर नॉट एबल टू, यू आर नॉट गोइंग टू सेल एवरीथिंग. 20,000 आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा. ऑल दिस आर बुलशिट, ठीक है ना? आप डोंट फोकस ऑन दैट. दिस इज सिंपल थिंग which people are doing from years. Now coming to bank nifty, same formula. EPS अभी इतना है, P इतना है, ये प्राइस है, median P 17.9, so it's 12.8, it's that cheap. But क्या होता है ना, if you again take forward EPS 10% growth मैंने assume किया, तो forward P is coming only 11.64. But in bank I don't see P को more importance. I only see price to book. तो price to book भी 2.2 चल रहा है बैंक निफ्टी का. Median is 2.6. So bank nifty again becoming cheaper. As a result,
मेनी फंड हाउस, इफ यू गो एंड सी फरवरी का उनका जो फैक्ट शीट आता है, आप सबके मेल में आता होगा, दोज हु आर हैविंग म्यूचुअल फंड्स फ्रॉम एनी ऑफ द फंड हाउस, वो अपना पोर्टफोलियो आपको भेजते होंगे एवरी मंथ. जस्ट गो एंड सी, दे विल बी हैविंग मेजर स्टॉक्स फ्रॉम बैंक्स ओनली. मेजर उनका मेजर पोर्टफोलियो एलोकेशन विल बी इन बैंक, बिकॉज बैंक आर चीपर. ठीक है. नाउ कमिंग टू द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ मिड कैप स्मॉल कैप का जो इतना इश्यू चल रहा है कि मिड कैप स्मॉल कैप यहाँ से खत्म हो जाएंगे. I've taken example of mid cap 150. EPS is 535, P is 34.4 as of now. Price इतना, median P is 27.6. तो अभी भी मिड कैप इज कॉस्टली, मतलब मीडियन पी के नीचे ही नहीं आया. ठीक है. तो मिड कैप 150 में करेक्शन इज पॉसिबल. ऑलरेडी करेक्शन आया, इट वाज एट ह्यूज लेवल, वहां से बहुत नीचे आया. इफ आई टेक 10% अगेन, तो फॉरवर्ड पे इज ओनली 31.27 अगेंस्ट 34.4. सो मिड कैप 150 इज स्टिल नॉट चीप. तो करेक्शन इज पॉसिबल इन मिड कैप 150. बट अगेन स्मॉल कैप 100, इफ यू सी स्मॉल कैप 100 P is right now 26.7, median P is 31.8. तो ऐसे भी चीप है. फॉरवर्ड पे के हिसाब से भी इट्स वेरी चीप राइट नाउ. ठीक है. एंड सेंसेक्स इज एट ओनली मीडियन पी, फॉरवर्ड पी में 19 है, तो सेंसेक्स इज ऑल्सो नॉट एक्सपेंसिव. तो क्रक्स इज दैट यहाँ से बड़ा फॉल इन निफ्टी सेंसेक्स, थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है गाइज, बिकॉज ऑफ मार्जिन सेलिंग एवरीथिंग, देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज. बट इफ यू सी द फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट ऑफ मेनी कंपनीज, ग्रोथ विल रिटर्न बैक डबल डिजिट में जून ऑनवर्ड्स या मार्च ऑनवर्ड्स. then again everything will change. So panic में मत आओ. Don't sell everything because many people are selling. If you are having good companies, आप उसको रखो. If you are not having good companies, उसको बेचो. Buy good companies, good stories, right? Again, you can do it's a, if you want, you can use mid cap 250, Nifty 750. अब many index are there. आप सब में एक्सरसाइज यूज करो. आपको डेटा कहाँ से मिलेगा वो मैं समझा दे रहा हूँ. See, डेटा मुझे कहाँ से मिला, आई विल एक्सप्लेन यू दैट थिंग. आपको सिंपली जाना था, आप यहाँ पे जाओगे ना स्क्रीनर.इन में, इफ यू गो, आप सिंपल यहाँ पे जाके यू राइट निफ्टी 50. पर जब ये सेंसेक्स था, यहाँ से मैंने पी लिया. ठीक है. आप यहाँ पे चार्ट है नीचे, ये पी रेशियो में जाओ, इसको मैक्सिमम कर दो. वन कैन यूज 10 ईयर ऑल्सो, और मैक्सिमम करके then is coming median P which we have used there. See why I'm telling about mid cap 150 ना, अगर आप mid cap 150 में जाओगे तो निफ्टी मिड कैप 150, तो यहाँ पे स्क्रीनर में क्या है कि 150 में कौन कौन से शेयर है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा. If you go to constituents and see P अभी कम हुआ है. If you go and just see P last 6 month में P was at 44. तो from 44 to 34 already came. ठीक है. सितंबर जहाँ करेक्शन चालू हुआ था 46 था, जबकि मीडियन वाज ऑलवेज 27. ठीक है. तो इसलिए करेक्शन आना था उसमें. नाउ दिस आर द 150 शेयर्स. यू कैन सी सबका पी 30, 18, 64, 51, 92. ठीक है. तो यही रीजन है. तो अगर मैं उसको वो कर देता हूँ, शॉर्टिंग हुआ क्या, हाँ सी नाइका का 915 पी है, एफएससीएटी का 584, डिलीवरी का 484, पीबी फिनटेक, जुबिलेंट. तो मेनी कंपनीज लाइक, अगर मोर देन 80 पी देखना आपको या मोर देन 70 पी भी देखना, देयर आर मेनी कंपनीज. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ऑलमोस्ट 25 कंपनीज आर देयर जिसका इतना हाई पी. ठीक है. तो दैट्स द रीजन कि निफ्टी मिड का 150 थोड़ा सा कॉस्टली लग रहा है. तो अगेन यू कैन सर्च मेनी इंडेक्स. यू कैन सिंपली सी मिड की निफ्टी मिड का 100 देख सकते हो, 150 देख सकते हो, अपॉन यू. ठीक है. तो आप अपने हिसाब से कर दो, आपको जो समझ में आए यू कैन डू. दिस इज सिंपल एक्सरसाइज.
You can perform on anything. ठीक है, निफ्टी 50 भी आप जाओगे वहां पे भी I've taken every data from there. Only 20.4 का ही पी चल रहा था, ये चार्ट से मैंने पी ले लिया, यहाँ से प्राइस टू बुक बैंक निफ्टी का यहाँ से लिया था। कंस्टिट्यूएंट में आप जाओ तो निफ्टी 50 में 50 कंपनीज का यहाँ पे नाम है, देख लो आप 50 कंपनीज, 50 कंपनीज नाम है। अभी क्या हुआ, बिकॉज सिंस मेनी कंपनीज 54 ब्रिटानिया है, 52 बीएल है, तो अभी ग्रोथ कंपनीज आने की वजह से निफ्टी का ई थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। दैट्स द रीजन यू आर फाइंडिंग निफ्टी का मीडियन पी थोड़ा सा लो। सो दिस वाज ऑल अबाउट पी वैल्यूएशन, ईपीएस, फॉरवर्ड पी, ठीक है, एंड दिस कंसेप्ट is very important, can be applied on anything, and this is the basics of valuation. You should do on regular basis, तो आपको समझ में आ जाएगा. You don't have to be dependent on others. See, our motto to start this group way back was only this कि हर आदमी डिपेंडेंट बन जाए और सोशल मीडिया पे डिपेंडेंस कम हो जाए, ठीक है. तो व्हेन यू नो कि यार निफ्टी मिड कैप का वैल्यूएशन आर हाई एंड आई एम होल्डिंग निफ्टी मिड कैप, तो यू शुड बी अलर्ट. तो अगर आपके से ये एक्सेल शीट रेडी रहेगी एंड यू ट्राई टू डू एवरीथिंग एवरी टाइम, तब आपके लिए ये अच्छा हो जाएगा. तो इफ एनी क्वेरी यू कैन आस्क, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ. आप अनम्यूट कर सकते हैं. हेलो. सो इफ एनी क्वेरी इस कंसेप्ट को लेकर आप पूछ सकते हैं. हेलो सर. यस यस सर क्वेश्चन था कि जो आश्वस्त दामोदरन है ना वैल्यूएशन का, हाँ 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 उन्होंने आर्टिकल लिखा था अभी यस इसके यस बारे में कि इंडियन इंडियन मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड है. हाँ हाँ तो उन्होंने कंपैरिजन भी दिया था कि चाइना मार्केट और यूएस मार्केट, तो यूएस मार्केट का पीई भी बहुत हाई है एक्चुअली अभी. हाँ. तो उसमें भी देखो ग्रोथ कंपनी, सी जो जो दामोदरन जी का वो आया था ना, व्हाट्स द डिफरेंस हाँ. अपने में और अपना कंसेप्ट और उनमें क्या डिफरेंस है. वी आर ओनली सीइंग इंडियन कंपनी बिकॉज वी बिलीव कि वी कैन इन्वेस्ट हियर ओनली, एंड ही वाज ऑफ द व्यू दैट यू डोंट इन्वेस्ट इन इंडिया राइट नाउ, देयर आर मेनी अदर कंट्रीज जहां पे अच्छा इन्वेस्टमेंट यू कैन गेट, ठीक है. तो उस हिसाब से ओके. वी टोल्ड दैट इंडिया इज क्वाइट एक्सपेंसिव एज ऑफ नाउ. और सर वैल्यूएशन में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी देखते हैं ना एक्चुअली, जस्ट वी डू नॉट लुक एट द नंबर्स एज वेल, राइट, कि यस. फ्यूचर में क्या अर्निंग्स आ सकती है यार. हाँ. तो और इमर्जिंग दैट्स कंट्री. तो हमने तो वही किया ना, हमें लग रहा है कि 10% से ग्रोथ आएगी ईपीएस में, ठीक है, अर्निंग में ग्रोथ आएगी. तो अभी वो ट्वीट हो सकता है. बहुत जन सोच रहे 12% ग्रो करेगा, बहुत जन सोच रहे 5-6% ग्रो करेगा. तो यू कैन यूज एनी मेट्रिक्स. आपको अल्टीमेट देखोगे कि इंडिया इज एट रीजनेबल वैल्यूएशन, ठीक है. दैट्स चीप भी नहीं है बट कॉस्टली नहीं है एज ऑफ नाउ. यस यस सर, थैंक यू फॉर द क्लियरिटी. थैंक यू सर. मैम फ्यूचर ग्रोथ सिंपली आप कोई भी कंपनी का कौन कॉल पढ़ोगे ना, या कोई भी कंपनी का इंडस्ट्री समझोगे तो आप समझ में आ जाता है कि कितना परसेंट से ग्रो करना चाहिए. तो वहां से एजम्पशन लेना बस. अब वो ग्रो करेगा नहीं करेगा दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट सिंपली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. एनीबडी एनी क्वेरी, कुछ कुछ भी चीज को लेके. Yeah, hi, Lilith. Can you hear me, right? यस यस Yeah, whenever the every bear comes, right? When the bull market is back, there are some sector rotation will happen, right? For example, some energy sectors or some metal sectors. It's out यस of the topic which you discussed, but या I या just want to know how things will work. So, या how can we find that? Some example you can say that the Nifty will be bottoming out under 20 to 500. Just I'm gonna invest somewhere
where I can focus more on the particular sectors. So I So, just sir, want to know how do we find that rather than the technical, I'm just asking. so again, there are two perspectives to find this. First is that you have to see, I mean, right now what will happen? Growth story, I guess it's over. Okay, last 3-4 years, everything was running on the basis of कि बहुत बड़ा growth आएगा, bit railway defense. Right now, we have to focus on value. So where can you find value? So you can find value in NBFCs, banking. You can find value in some of the capital goods company, engineering companies, on metals. Okay, because steel prices again are bouncing back from their lows. And second is you can do this exercise and you can see which index is cheap. Okay, right? For example, if you go and just write any index, like for example, I'm writing Nifty Pharma. You just go and write Nifty Pharma. Nifty Pharma is currently 32.1 PE. And if you go and do the exercise, so this will help you out to find which index is cheap. Okay, so 37. So Nifty Pharma is cheap as of now. So it becomes more lucrative. And you will see gradually, if you do back testing also, na, Nifty Pharma will outperform. See, यहाँ पे Nifty Pharma was made top here. Okay, Nifty Pharma made top here also. But यहाँ पे it was at bottom. And that's the reason you have seen post-COVID, the fastest sector to run was Nifty Pharma only, Nifty IT also. So you can do this exercise also. It will help you to find which sector will grow in the next bull run. Yeah, okay. Detailed explanation for Sir, I'm finding somebody asked na CDMO companies. Yeah, I track CDMO companies. I'm invested in many of them actually as of now. MGL is good, मतलब fundamental wise, valuation wise. अभी small cap पे 250p कैसे है भी कर सकते हैं कुछ. So again Nifty 250. So Nifty ETF, Nifty B's का difference is Nifty B's you can buy. Right now Nifty ETF का value will be lower because of the mutual fund expenses. Nifty small cap 250. So Nifty small cap 250 है going to the index है. ये तो ये वाला. It's 27.5 है अभी इसका. If you go and see the P ratio, it's 29.8 median P. So Nifty small cap का valuation अच्छा correction के बाद में it's good, but mid cap is थोड़ा सा highly valued as of now. So again guys, to simplify everything, so panic mat karo. Simple thing was that to explain you with all data is don't panic. Don't sell everything. Let market stabilize. गिरने तो जितना बढ़ना अपने हाथ में नहीं है. But since every news is over as of now, Trump का थोड़ा दिन का और issue रहेगा 15-20 दिन का. He will come and he will say we will do that and blah blah blah. Eventually everything will settle down. I think we have to focus on earning, which will start coming from April. So focus on that. Don't focus much on social media and everything, because again, the negativity will impact your mind. As a result, you will think, यार काश यहाँ sell कर दे. For example, HAL, many of you are holding as of now. ठीक है? तो अभी आपको मन में क्या आता है? काश यार, I have sold it here at 5,500, 4,500. Okay, it won't happen like this. Okay, so again, people will buy HAL. See, you can use simple exercise also. 27.2 का P आ गया. HAL was trading at, you won't believe कितना का P था HAL का. See, HAL का P was 50. तो HAL का half correction हो गया. Again, median P is 14.2. That's the reason I was, if you go and check my all the messages, I was clear, very clear since June. Just in election result, please exit HAL, please exit defense companies because of this valuation. Earning दिख नहीं रहा था, valuation was high. The Pidilite example, people thought 25% growth आएगा, and I was very sure growth नहीं आएगा.
and it will become more expensive, so correction will be more severe. And you can see since this very top bana tha P ratio का July 24 and we won down June 24 जिस दिन result आया था. See what happened from since then. जब हमने वॉर्न किया था यहाँ पे कहीं, हमने यहाँ पे वॉर्न किया था, ये 4 जून वाला है. प्राइस 4700, फिर प्राइस ऊपर गया 5500. मेनी पीपल टोल्ड गलत हो गया आप. But again, see what happened. Eventually, what matters is have you sold or not, right? Eventually, see क्या correction है 5500 से आज 3500 आ गया. 2000 point correction, almost 40-45% correction. So in this way also you can see कौन सा stock cheap है कौन सा नहीं. Sir, chemical companies outlook is it's okay, not that good. ठीक है. Everything will take time. Have reasonable expectation. 12-15% portfolio growth is very good over the years, right? But आप अपना आदत हो गया ज़्यादा. You can give any example. One was this. One was उठा much down top. I never had this companies. See, इसमें भी सेम हुआ. अभी तक P32 चल रहा ना, but see पीक में पीक क्या था? When we were saying मत लो ये सब, यहाँ पे देखो 60 का पी था, मीडियन इज 15.7, मतलब इसमें ग्रोथ आ ही नहीं रहा था. और प्राइस में भी क्या हुआ 2800 was the high, it went to 1900 और right now it's 2100. So again the growth will be slow, प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाएगी. So focus on value stocks, यहाँ पे वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल है and you can have a significant rise जब नया वापस से मार्केट will start going upwards. और अभी वापस ये याद रखना, सी नेवर फॉरगेट दिस थिंग. अगेन इफ यू गो टू दिस शीट ना, इसमें ये चीज प्लीज याद रखना. इफ निफ्टी बिकम्स 25,000, सी आई माय व्यू इज निफ्टी विल बी बिटवीन 22,000 26,000 होल ईयर. ओके, सो अगर 26,000 चला जाता है तो अगेन इट विल बिकम एक्सपेंसिव, राइट? मतलब वो वैल्यूएशन वैसा हो जाएगा. सो डोंट फॉल कि जब 25-26,000 आया तो यार यहाँ से तो 30,000 जाएगा. 30,000 नहीं जाएगा, ठीक है? सेम विथ मिड कैप. इफ ये 18,000 वाला अगेन मूव टू 25,000, इट विल बिकम अगेन एक्सपेंसिव. तो उस टाइम में मत बोलना यार और लेते. जस्ट फोकस ऑन योर डेटा. if small cap becomes 20,000, again it will become expensive. तो अभी अपने को बहुत ध्यान देना. मैंने पीपल से सेंसेक्स 1 लाख चला जाएगा एंड ऑफ ईयर. अगर 1 लाख जाए तो सेंसेक्स कॉस्टली हो जाएगा ना, तो अगेन फॉल विल कम. अगर इसको 1 लाख जाना है तो उसके लिए सी क्या हो रहा है. अगर इसको 1 लाख जाना है तो उसके लिए इसको भी इंक्रीज होना पड़ेगा बाई 20%, तब जाके रीजनेबल रहेगा. एटलीस्ट 20 भी नहीं हुआ तो 15-16% से इंक्रीज होना चाहिए, तब थोड़ा सा रीजनेबल रहेगा. तो यू हैव टू सी ऑल दिस डेटा. डोंट जस्ट फोकस टीवी वाले क्या बोलते हैं कि सेंसेक्स 1 लाख हो जाएगा, निफ्टी 30,000 हो जाएगा. डायरेक्ट नहीं होगा ना, बिकॉज दैट्स द रीजन बिहाइंड दिस. एवरीथिंग इज देयर. तो निफ्टी मैक्सिमम you will find from first January का से प्राइस से निफ्टी will move 10% for sure. 9-10% ग्रोथ मिलेगा इस साल भी. बट अगेन अपसाइड इज मैक्सिमम, डाउनसाइड इज मैक्सिमम. ठीक है ना, मतलब सब चीज डिफाइंड है. सर BSC, CDL, MC, Angel One, I hold some of this. Again, see ये it's a longer term story. Why I'm holding, I've told also last time also, I'm holding Angel One, CDSL. ठीक है, they have fallen much from top also. I am holding because my thought process was कि India 3 trillion economy है right now, 2.5 trillion. India will become 10 trillion economy, 3x. जब economy 3x बनेगी ना, this all stock have to perform only, right? तो अभी जितना भी है they will have a fall अभी थोड़ा सा, because SIP close हो रहा है, DMAT close हो रहा है. If you see the newsletter which we have shared today, many SIP have closed. SIP closure is at all time high actually. DMAT close भी हो गया, तो इससे impact आएगा on earning of BSC, NSE, जितने भी ये कंपनीज है. ठीक है, बट इवेंचुअली क्या होगा, धीरे धीरे जब वापस से मार्केट सुधरेगा सब कुछ भूल जाएंगे सब कुछ, तो आप वो प्राइस में फिर बाई नहीं कर पाओगे. यू विल हैव अ थॉट, काश आई हैव बॉट CDSL at 1,000 rupees, उस समय गिरा था, now I'm buying at 2,000 rupees. So since market is forward looking, the pain is there may be some more fall.
in all these companies, BSC, NSE, में जितने भी ये वाले companies हैं, broking companies में, but eventually अगर my thinking is India will grow, ठीक है, the economy will grow, then all these companies will perform. If didn't grow, अगर यहाँ से market नहीं चला, India grow नहीं किया तो नहीं बढ़ेगा company. It's very simple. So guys, thank you so much for joining. अगर आपको अच्छा लगा तो please write in our group. Okay, or I will share this recording. और ये अभी खत्म भी होने वाला है. Thank you joining.